Hello students, welcome to Matrix YouTube channel. We are here to discuss the Matrix Olympiad paper of class 5th Mathematics conducted on 15 October 2023. So before starting the solution of the paper, please don't forget to subscribe our channel ताकि आपको जितनी भी अपडेट्स है MOF से रिलेटेड वो सारी आपको इसी चैनल पर रेगुलरली मिलती रहें. So let's start the discussion of the paper. Now let's start the first question of the paper. First question is, which line in the figure given below is vertical? कौन सी line इसमें vertical line है? तो आपको ये बताना है vertical line क्या होती है? Standing line. So here OA is the vertical line here. Here option A is the correct answer. Now the next question is, which of the following has a definite length? आपको बताना है किसके पास definite length है. So here option B is the correct answer. That is a line segment. एक line segment के पास definite length होती है. Ray, line, a plane इनके पास कोई definite length नहीं होती है. Now the next question is question number 3. How many degrees are there in a straight line? एक straight में कितनी degrees होती हैं? So we know that in a straight there is 180 degree angle. So here option C is the correct answer. Next question is question number 4. Which of the following is not an obtuse angle? कौन सा इनमें से obtuse angle नहीं है? तो हम जानते हैं obtuse angle क्या होता है? The angle which is greater than 90 degree but less than 180 degree. तो यहाँ पर greater than 90 degree में option A, C and D ये तीनों ही हैं जो कि 90 डिग्री से ग्रेटर हैं बट 180 से लेस है. So here option B is the correct answer because it is less than 90 degree. Now the next question is question number 5. Subtracting 10,000 from 1 million gives. हमें 1 million में से 10,000 लेस करने. So let's write down 1 million. Subtracting 10,000 from it, we get 9,90,000. So here, let's check the options. Now, according to our answer, option B is the correct answer. Now, the next one is question number 6. Question 6 है, Mr. Bose spent rupees 450 for petrol on Wednesday. Wednesday को Mr. Bose ने 450 expend करें. So expenditure हो गया उनका on Wednesday. Rupees 450 on Wednesday. Now next is he spent rupees 125 more than that on Thursday. तो जितना उन्होंने Wednesday को खर्चा किया था उससे ज्यादा उन्होंने खर्चा कर दिया है जिसमें 125 रुपीस और ऐड हो रहे हैं. तो 450 तो उन्होंने पहले कर रही थे प्लस 125 और हो गया उनका थर्सडे को. सो टोटल हो गया आपका 575 रुपीस. सो ये हो गए हैं स्पेंट ऑन थर्सडे. लास्ट में कहता है हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन पेट्रोल ऑन दोस 2 days. इन 2 दिन में टोटल उनका कितना खर्चा हुआ. So we have to just add 450 and 575. Addition के बाद आपको मिलेगा 5 2 1. Then 1025 is the total amount that was spent by Mr. Bose. So here option A is the correct answer. Now the next question is question number 7. मल्टीप्लाई एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपको मल्टीप्लाई करना है और चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है. सो हियर इन ऑप्शन 1 वी हैव 25 मल्टीप्लाई बाय 26. तो 25 को जब 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखा है 750. दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट हियर 650. तो हमारा ए ऑप्शन सही नहीं है. नाउ in the next option it is 29 multiplied by 35 और ये आंसर देता है 1045 which is not a correct answer. So here after the multiplication what you will get, here the correct answer will be 1015.
Next, in the C part, 89 multiplied by 97 gives us 8633, which is a correct answer. So according to the option, we can say that option C is the correct answer. क्योंकि 42 multiplied by 50 जब हम करेंगे तो we will get the correct answer, that is 2100. तो multiply करने के बाद यहाँ पर भी हमें एक incorrect answer मिलता है. So in this question, option C is the correct answer. Now the question number 8. Question 8 है, a bus can hold 108 passenger, means 108 passenger उस बस में बैठ सकते हैं जो बस हमें दी गई है यहाँ. If there are 12 rows of seats on the bus, अगर बस के अंदर 12 rows हैं तो क्या होगा? How many passengers are there in each row? हमें बताना है कि हर एक रो के अंदर कितने पैसेंजर्स बैठ सकते हैं. तो यहाँ पर आपको 108 को डिवाइड करना है 12 से, so that you can get the total number of passenger that can sit in a single row. तो यहाँ पर आपके पास 108 को डिवाइड करना है 12 से, and after division we will get 9. So here option C is the correct answer. I hope you understood. Now here in the 9th question, which of the following number has 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 7 as its prime factorization? आपको बताना है कौन सा नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है. Let's start the multiplication and check. So here we have to multiply all these numbers, and after the multiplication we get 1260 as the correct answer. So here out of these 4 options we have option C, the correct answer. Now let's start the question 10th. In this question we have to find first 3 common multiple of 2 and 14. हमें 2 and 14 के first 3 multiples पता करने हैं. तो उसको पता करने के लिए हमें क्या करना है, 2 की अगर हम लोग टेबल लिखेंगे तो 2 के जो multiples होते हैं वो 14 तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे. So हम लोग क्या करेंगे, we will going to write down the multiples of 14 so that we can check which are the 3 multiples that comes the first number. तो पहले 3 multiples कौन होंगे, वो 14 के multiple से ही पता लग जाएगा. So here we have to know the table of 14. अगर नहीं पता है तो multiply करके आप लोग check कर सकते हो. So here starting with the 14, तो 14 times 1 is 14, 14 times 2 is 28, 14 times 3 is 42. So here the starting 3 multiples of 14 are 14, 20 and 42, and these same 3 numbers fall in the table of 2 also. So यहाँ पर common चीज क्या होगी, 14, 20 and 42, right? So here option C is the correct answer. Now the next question is question number 11. The least number which should be added to 2497 so that the sum is exactly divisible by 5, 6, 4 and 3. हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो exactly divisible हो जाए 5, 6, 4 and 3 से. So first of all what we have to do, we have to find out the LCM of these number. So LCM क्या हो जाएगा इन numbers का, that is 60. So first what we have to do, after finding out the LCM we have to divide 2497 by 60. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2497 को 60 से, we will get a remainder, that is 37. तो जब आपको रिमाइंडर मिल जाएगा डिवाइड करने के बाद, so what we have to do, we have to subtract 37 from 60. So after subtracting 37 from 60, we will get number 23. Now this is the number which we have to add in the given number, that is 2497. जब हम इस 23 को 2497 में add करेंगे, so we will get here 2520. And this
2520 is that number which is divisible by 60. So here the correct answer is option B, that is 23. तो 23 एक ऐसा नंबर है जिसको हमें ऐड करना है 2497 में. In question number 12, which of the following statement is incorrect? Out of this 4 statement, we have to find out one statement that is incorrect. So let's start with the first statement. If an even number is divisible by 2, the question may be odd or even. It's correct. अगर कोई भी even number हमें मिलता है, ठीक है, कोई भी even number अगर divisible है 2 से, तो हो सकता है हमारे पास even number भी आ जाए क्वेश्चन में, and it can be odd number also. So here the first statement is true. अब चलते हैं second statement पे. The sum of two prime numbers is not always even. दो प्राइम नंबर है, उन दोनों प्राइम नंबर का जब हम सम करेंगे मीन्स प्लस करेंगे, जैसे आपके पास प्राइम नंबर हो गए 3 and 5 ले लेते हैं, इनको जब हम प्लस करेंगे तो क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज नॉट ऑलवेज इवन, हमेशा इवन नहीं होता. तो जब इन दोनों को करेंगे तो वी विल गेट एन इवन नंबर. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. अगर मैं 2 और 3 को करूं तो यहाँ पर आता है ऑड नंबर. तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि हो सकता है इवन भी आ जाए और हो सकता है ऑड नंबर भी आ जाए. नाउ द नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट इज द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर इज इवन. Sum of two odd numbers, let's take two odd number, that is 3 plus 5, और एक इवन नंबर ले लेते हैं, let's take 2. तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा, एक इवन नंबर होगा. Let's calculate. 8 plus 2 is 10, तो 10 क्या है हमारा इवन नंबर. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, दो ऑड नंबर ले लेते हैं, let it be 5 plus 7, सॉरी, और एक इवन नंबर ले लेते हैं हम 4. Here it comes 16. तो यहाँ पर देखो दोनों जो आंसर्स आए हैं वो हमारे पास इवन नंबर है, और माइट भी आप और भी एग्जांपल्स लेंगे तो द सम विल बी इवन नंबर. सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. अब चलते हैं लास्ट स्टेटमेंट पे. ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स. ये कहता है जितने भी इवन नंबर होते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली false, or we can say that incorrect, because even number में हमारे पास 2 भी होता है. 2 is also an even number. तो 2 हमारे पास composite number नहीं है. composite number क्या होते हैं, the number which are having more than 2 factors, and here 2 is our single number that is prime also and it is even number also. So this statement is false. So here we can say that option D is the correct answer. Now we have question number 13 here. 13 क्वेश्चन में हमें करना है find the parameter of a square book of size 20 centimeter. आपके पास पैरामीटर आपको फाइंड आउट करना है किसका, एक स्क्वायर बुक का. तो आपके पास साइड गिवन है, पैरामीटर निकालना है. वी नो द फॉर्मूला 4 into side. So here what we have to do, 4 multiplied by side is 20. So here the correct answer will be 80 centimeter. So out of 4 options, we have option A, the correct answer. Now here we have 14 question, and in this 14 question, आपसे पूछा गया है find the area of a rectangle whose length is 15 centimeter and breadth is 6 meter. है ना, एक और easiest question. तो आपको निकालना है एरिया, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, L into B. So here the area of rectangle is L into B. Let's put the value 15 multiplied by 6, which gives us, here you can see that 15 is in the centimeter, और यहाँ पे जो 6 है वो है आपका मीटर के अंदर. तो यहाँ पे जो आंसर्स हैं ऑप्शन के अंदर they all are in the centimeter. So we have to convert the meter into centimeter. So here for the conversion we know that 1 meter is equal to 100 centimeter. तो मीटर को हम कर देंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट. सो हियर 6 मीटर is converted into centimeter. So 6 multiplied by 100. So after multiplication what we get here, 15 multiplied by 6 is
90, and after multiplying 90 by 100 we get 9000 centimeter squared. So the area of the rectangle is 9000 centimeter square, and here we have option D, the correct answer. Now let's start with the next question, that is question number 15. And in this question what we have to do, a farmer need to buy fencing to go around his garden. एक farmer है, farmer को करनी है fencing. Fencing का मतलब क्या है, उसको चारों तरफ तारबंदी करनी है. So here farmer has a ground and farmer want to fence that garden. This garden is in the shape of a square. अब shape क्या है garden की? That is square. So the side of that square is 12 meter. तो आपके पास एक garden है, garden की shape आपको given है, that is square. आपको side दे रखी है एक square की, that is 12 meter. And now you have to do the fencing. So fencing करने के लिए हमें निकालना होगा perimeter. And what is the perimeter of a square? That is 4 multiplied by side. So here let's put the value 4 multiplied by 12, and which gives us 48 meter. So here perimeter of square garden is 48 meter. So here option B is the correct answer. So let's start with the 16th question. 16th question में आपको बोला गया है that you have to find out the parameter of a figure that is A, B, C, D, E, F. So here this is a irregular shape और आपको सबसे easy चीज निकालनी है, that is parameter. तो पैरामीटर निकालने के लिए हमें पता है irregular shape का अगर आपको पैरामीटर फाइंड आउट करना है then you have to add all the sides of that shape. So पैरामीटर ऑफ irregular shape is sum of all the sides. यहाँ पर आपके पास एक irregular shape है, AB साइड आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, BC साइड आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, ओ बट DC साइड आपको गिवन नहीं है. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, AB आपके पास फुल साइड गिवन है that is 10 सेंटीमीटर, जिसमें से 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी आपके पास गिवन है. अब बची आपके पास ये वाली साइड, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, you will get 5. तो here साइड DC is equal to 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गया, this is 4 सेंटीमीटर, this is 5 सेंटीमीटर and F is equal to 4 सेंटीमीटर. अब आपको क्या करना है, you have to add them all, and after adding 10 plus 8 plus 5 plus 4 plus 5 plus 4 you will get 36 centimeter. So here option D is the correct answer. Now the question number 17. 17 is totally based on the formula. Formula है आपका वॉल्यूम का और आपको किसका बताना है, क्यूब के लिए. So it is a direct question. यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है. Now क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हमारे पास क्यूबॉइड दे रखा है और वॉल्यूम दे रखी है इस क्यूबॉइड की. So here volume of a cuboid is 972 meter cube and length and breadth is also given to us, that is 6 meter and 13.5 meter. And what we have to find out? Here we have to find out the height of the cuboid. अब आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. लेंथ एंड ब्रेथ आपके पास ऑलरेडी गिवन है, वॉल्यूम आपके पास गिवन है क्यूबॉइड का. सो हियर वॉल्यूम इज 972, लेंथ आपके पास गिवन है 16, ब्रेथ आपके पास गिवन है 13.5 एंड हाइट इज अननोन टू अस. अब हाइट हमें नहीं पता तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड इट आउट. अब फाइंड कैसे करेंगे, फॉर्मूला से. तो यहाँ पर हम वेरिएबल को सेम प्लेस पे रहने देंगे एंड वी विल ट्रांसपोज रेस्ट ऑफ द थिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. सो हियर 16 एंड 13.5 इज इन द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. दूसरी साइड में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो हियर 16 मल्टीप्लाई बाय 13.5 दैट इज इक्वल टू हाइट. यहाँ पर हम लोग कैंसिलेशन करेंगे. कैंसिलेशन करने के बाद हमारे पास हाइट आ जाएगी 4.5 मीटर
as all the things are in the meter, so the height is 4.5 meter. So here option C is the correct answer. Now the next question is question number 19, and in this question what we have to do, we have the volume of one cube that is given to us 27 सेंटीमीटर क्यूब. हमें वॉल्यूम पहले से ही गिवन है एक क्यूब का. अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि here we have a figure in which few cubes are placed together. Now one cube का जो वॉल्यूम है that is given to us 27 सेंटीमीटर क्यूब. Then find out the volume of the given diagram. अब इस डायग्राम का हमें पूरे का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास चेक करना पड़ेगा कितने क्यूब्स हैं. Here we have 1, 2, 3, 4 and this is 5. So we have 5 cubes attached together. Now volume of one cube is 27 सेंटीमीटर क्यूब. अब ऐसे ही वॉल्यूम के हमारे पास 5 और बॉक्सेस रखे हुए हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 5. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विद 5 वी गेट 135 सेंटीमीटर क्यूब, एंड हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Now here the next question is question number 20. Question number 20 is the amount of space of a solid occupies is called. जो space occupy करी जाती है solid में उसको हम क्या कहते हैं? That is known as volume. So here option C is the correct answer. Now here in this 21st question we have मैच द कॉलम. एक कॉलम 1 है, एक कॉलम 2 है, दोनों को हमें क्या करना है, करेक्ट चीज के साथ मैच करना है. नाउ फर्स्ट इज एलसीएम ऑफ 3, 9, 12. 3, 9, 12 का एलसीएम क्या होगा? सो वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 3, 9, 12 and that is 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3. So after taking the LCM of 3, 9 and 12 we will get 36. So LCM of 3, 9, 12 is 36. So here we have to match P with third of column 2. Now next is LCM of 8 and 12. 8 and 12 का LCM क्या होगा? सेम वे में आपको 8 and 12 का निकालना है. आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने अभी ऊपर वाले में करी थी. So 8 and 12 का जब आप LCM निकालोगे तो like this we have to do the prime factorization. So here 2 times 2 is 4, 4 2 is 8, 8 3 is 24. तो मैंने आपको दोनों मेथड से बता. Now the next one is factor of 84. अब 84 का फैक्टर क्या होगा? The last option which is left is 42. 84 का फैक्टर 42 होगा. So the correct sequence is 3, 2, 1. So here 3, 2, 1 is the B option. So here B option is the correct one. Now question number 22. 22 is again the match the column. फटाफट से चेक करते हैं कौन सा वाला सही चीज को मैच कर रहा है. So here 22 क्वेश्चन में कॉलम 1 के अंदर कुछ लाइंस आपके पास हैं और कॉलम 2 के अंदर उन लाइंस के नाम दे रखे हैं आपको. So we have to match them. First आपके पास 2 lines हैं and they seems to be parallel to each other. So here first one is parallel lines. सेकेंड लाइन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि 2 लाइंस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एक कॉमन पॉइंट पे. सो Q इज इंटरसेक्टिंग लाइंस. R है आपके पास. R जो ऑप्शन है इसमें 2 लाइन आपको इंटरसेक्ट करती तो नजर आ रही है, बट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज 90 डिग्री. सो इन लाइन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस. सो द सीक्वेंस विल बी 3, 1, 2. So let's check. 3, 1, 2 is in option C. So here option C is the correct answer. Now question number 23. 23 में भी मैच द कॉलम है, बट यहाँ पर आपके पास कॉलम 1 में वॉल्यूम बोला गया है क्यूब का, जो कि बहुत ही इजी फॉर्मूले से निकल जाएगा. तो क्यूब के लिए हमें वॉल्यूम पता है. वॉल्यूम कैसे निकालते हैं क्यूब का? साइड इंटू साइड इंटू साइड. और ये सेम फॉर्मूला आपको तीनों P, Q, R में अप्लाई करना है.
So here side is given to you, that is 14 centimeter. तो 14 centimeter को आपको 3 times multiply करना, 14 centimeter multiply 14 centimeter multiply by 14 centimeter. So after multiplication, what you will get? You will get 2744. Now for cube, वॉल्यूम ऑफ क्यूब उस साइड इज 17 सेंटीमीटर. अब 17 सेंटीमीटर वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17. तो 3 टाइम्स आप जब 17 को मल्टीप्लाई करोगे, सो हियर यू विल गेट 4913. क्लियर? नाउ द लास्ट वन इज 19 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 19 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 19 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 19 सेंटीमीटर. तो 3 बार आप 19 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 6859. सो हियर द सीक्वेंस इज 231. तो 231 हमारे पास है ऑप्शन ए में. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 में 3 स्टेटमेंट है. 3 स्टेटमेंट में से आपको पता नहीं है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है. तो हियर लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेटमेंट. एन एंगल दैट मेजर मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल. बिल्कुल सही है. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री. सो हियर स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट. सो ये हो गई हमारी ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की. सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स. बिल्कुल, एक लाइन सेगमेंट के अंदर 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. सो हियर सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. द थर्ड स्टेटमेंट इज वी कैन मेजर अ लाइन. एक लाइन को मेजर किया जा सकता है. सो स्टॉप हियर टू थिंक. एक लाइन को हम लोग मेजर नहीं कर सकते बिकॉज एक लाइन दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है. So we can't measure a line. So here statement 3 is false. तो हमारा सीक्वेंस हो गया है true true false. So here true true false is option D. So option D is the correct answer. Now question number 25. Question number 25 is again a true false question. आपको बताना है 3 स्टेटमेंट में से कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है. सबसे सिंपल क्वेश्चन. तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट आपके पास है LCM of the numbers 8 and 20 is 40. तो आपके पास LCM है 40 किसका? 8 and 20 का. So this statement is absolutely correct. तो ये true है. Next statement we have product of two numbers 39 and 14 is 1302. जी नहीं, दो नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 39 and 14 को तो आपके पास 1302 नहीं आएगा. कैसे करेंगे? You can multiply it by 14. So after the multiplication, what you will get? You will get 546. So here the product of 39 and 14 will be 546. So this statement is false. Next है prime factor of 40 is. Prime factors 40 के आपके पास हैं 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 5 and this is absolutely correct. So here the sequence will be true false true. So true false true is the correct sequence. Check कर लेते हैं यहाँ पर. Option C is the correct answer. Now the next question is again true false question, that is 26 question. अब 26 question में पहला statement फटाफट से देखते हैं क्या है. One side of a square is 5 centimeter, then perimeter of a square is 20 centimeter. So this statement is true or false. आप अप्लाई करें फॉर्मूला, चेक करें. वन साइड आपके पास 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो पैरामीटर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. आंसर इज 20 सेंटीमीटर. बट यहाँ देखिए स्क्वायर लग रहा है. स्क्वायर कब लगता है यूनिट में? जब आपको एरिया फाइंड आउट करना होता है. बट यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है पैरामीटर. सो हियर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 12 सेंटीमीटर साइड दे रखी है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे साइड इनटू साइड करके. तो यहाँ पे जब आप एरिया फाइंड आउट करोगे तो हियर यू विल गेट 144 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट
थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज अ राइट एंगल। तो एक स्क्वायर के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो हियर द सीक्वेंस विल बी फॉल्स ट्रू ट्रू। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सही? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Now, the next question is based on paragraph. तो पैराग्राफ आपके पास है। The BODMAS rule follows the order of the BODMAS acronym, that is B for brackets, O for order of powers, D for division, M for multiplication, A for addition, and S for subtraction. Mathematical expression where the multiple operates need to be solved from left to right in order of BODMAS. BODMAS रूल को फॉलो करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लेट्स बिगिन विद द कैलकुलेशन एंड फाइंड आउट क्विकली द करेक्ट आंसर। So here the first statement will be like this. हमने सबसे पहले डिवीजन को फॉलो करा है। 27 divided by 3 is 9 here and 8 and 16 divided by 8 is 2. So after the division, what we are going to perform? We are going to perform multiplication. Now the next step will be 12 plus 54 plus 2 minus 4. Now the next one is and here we comes with an answer that is 64. After applying the BODMAS rule, we have answer 64 here with us. So here option B is the correct answer. So let's begin with the next question. Question number 28. अब ये question number 28 भी same paragraph पे based है, that is of BODMAS. BODMAS rule हमें apply करना है and we have to find out the answer according to that only. So here let's we go. Let's start. 45 plus 34 divided by 2 is 17. Multiply by 82 divided by 2 is 41 minus 3. तो सबसे पहला काम हमने डिवीजन का करा है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे मल्टीप्लीकेशन। सो हियर 45 प्लस 17 multiplied by 41 is 697 minus 3. So after this we are going to add 742 minus 3, that gives us 739. So here option A is the correct answer. Now let's solve question number 29 and in this question we have another paragraph. और दूसरा जो paragraph है ये हमें क्या information देता है? Let's find out. Paragraph says that Rohan have cuboidal block. रोहन के पास एक cuboidal block है. He want to cut a cuboidal block of wood into 8 equal cubes. वो चाहता है कि उसका जो cuboidal block है उसको वो 8 pieces के अंदर equally cut कर दे. इनकी एजेस है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर एज है एक क्यूब की। सो हियर रोहन 8 इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्लॉक को कट करना चाह रहा है जिसमें एज उसने बताई है एक क्यूब की 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हिज इनिशियल ब्लॉक ऑफ वुड। इनिशियल मींस जो स्टार्टिंग के अंदर उसके पास जो पूरा क्यूबॉइडल ब्लॉक है उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल क्यूब। तो सिंगल क्यूब आपके पास है 4 सेंटीमीटर का जिसका एज है। वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब हम लोग फाइंड आउट करेंगे और इस वॉल्यूम ऑफ क्यूब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, क्योंकि वो बाद में 8 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करेगा। तो हमें पता है कि अगर एक का निकाल लिया तो पूरे इनिशियल क्यूबॉइडल ब्लॉक का हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो हियर 8 multiplied by 4 multiplied by 4 multiplied by 4 and which gives us 512 centimeter cube. तो here 512 centimeter cube क्या है हमारा? ऑप्शन सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। और यही हमारा वॉल्यूम है इनिशियल ब्लॉक का। नाउ वी हैव कम अक्रॉस टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। इस पार्ट में 30th जो क्वेश्चन है वो भी टोटली बेस्ड है प्रीवियस पैराग्राफ पे। और वो प्रीवियस पैराग्राफ क्या था? जो क्यूबॉइडल ब्लॉक रोहन के पास है।
So here, what we have to find out in this question, find the volume of the each cuboidal block. आपको एक single cuboidal ब्लॉक का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. पहले हमने इनिशियल का किया था और इस क्वेश्चन में हमें सिंगल का करना है. तो सिंगल का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एज है 4 सेंटीमीटर की. सो हियर 4 multiply by 4 multiply by 4 which gives us 64 सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम क्या होगी एक सिंगल क्यूबॉइडल ब्लॉक की, या आप कह सकते हो एक सिंगल क्यूब की, वो हो गई है 64 सेंटीमीटर क्यूब. सो हियर वी एंड विद द पार्ट 1 ऑफ मैथमेटिक्स. आई होप you all understood all the questions very well. Thank you. Hello students, today I will discuss the MO of paper solution of class 5th part 2nd science. For more information, for more notifications regarding this exam, let's like, share and subscribe this channel. Our first question is, why bats are considered as a nocturnal animals? Nocturnal animals are those animals which are active during the night time and inactive during the daytime. So our correct option will be they are active during the night and sleep during the daytime. So our correct option will be option C. Now our next question is, salamander and urodels are all, they belong to the class amphibians. So our correct option will be option B. Now move to the next question. Dash Anopheles mosquito spread malaria. Which kind of mosquito spread the malaria disease, which is a protozoan disease? So our correct answer will be female Anopheles. Option A will be the correct answer. Move to our next question. Which animal group does the ant belong? Ant belong to the phylum Arthropoda, and Arthropoda are the invertebrates. So our correct answer will be option B. Now our next question is, example of plants whose seeds are dispersed by wind. It is a kind of a pollination in which the pollen grains are dispersed with the help of wind. Our correct option will be option C, dandelion. Clear? Our next question is, sepals are collectively called as. Sepals, as we know that sepals is a part of flower and it is the outer part of the flower. That will be option B. So our correct answer will be calyx. Now our move to the next question. After fertilization, the ovary of the flower enlarge and become. As we know that fertilization is the process by which male and female gamete fuse together and form a zygote, and then zygote develop into the embryo. In case of plants, the part which is developed into a fruit, that will be ovary. Ovary develop into fruit. Our correct option will be option C. Now next question. Egg laying animals include. Egg laying animals are those animals which are oviparous, and the correct option will be fish, amphibians, reptiles. All are oviparous animals. Option D will be. Now our correct answer will be option D. Now next question is, the gestation period in humans is. Gestation period is the time period of pregnancy. In case of humans, it is 9 months. It is 9 months, and option B will be our correct answer. Now next question. Animal reproduce through the part of their body by. First is budding, second is fragmentation. Both these options are a kind of asexual reproduction. So both are correct, and both A and B is given in the option C. So our correct answer will be option C.
Now next question. For more details regarding this exam, for more informations, for more notifications regarding this exam, subscribe this channel. You will get the notification, result regarding information, all this information on this channel. Now next question is the process in which liquid change into solid by decrease in temperature or increase in pressure. As we know that liquid is changes into solid, it means it is a freezing, and freezing is the process in which option D is given. So our correct answer will be option D. Now next question. Wet clothes dry by the process. We have to remove the water from the wet clothes. It is a process by which we can remove. That kind of process is known as evaporation, and that water will convert into vapors, and that is given in the option A. So our correct answer will be A option. Now next question. Gases dissolved in liquid. Which example justify this type of solution? As we all know that aquatic animals take oxygen from the dissolved in water, and that will be given in the option A. So our correct answer will be option A. Now move to the next question. We can help to conserve water by practicing. As everyone knows here, water is the one of the precious resource at right now. We can save it by reduce, reuse and recycle, and last one is all of the above. So all these are correct and it is given in the option D. So our correct answer will be option D. Now next question. Heat energy obtained from the earth is a form of which form of energy obtained from our planet Earth? That is known as geothermal energy. It is given in option B. So our correct answer will be option B. Next question. Example of renewable source of energy. Which kind of energy which can be renewed after a period of time? That kind of energy is known as renewable energy. It is given as the hydro energy, coal, nuclear energy, natural gas, in which renewable source of energy is hydro energy. So our correct option will be hydro energy. Now move to next question. Which of the following statement is not correct about energy? We have to find out the incorrect statement. First one is given energy is stored. It can be stored in any form. Energy can be converted into from one form to another form. It can be converted from one form to another form. That is right also. Chemical energy can be converted into electrical energy. The best example is inverters. Last one is energy can be created and destroyed. It is the incorrect statement. So our correct answer will be option D. Next question. The form of energy stored in food materials is which kind of energy or which form of energy is stored in food materials? That is chemical energy in the form of starch or monosaccharides that are known as glucose. Clear? So our correct answer will be option A. Next question is, the food gives us energy after. As we know that first process of intaking of food is known as ingestion. After that, the complex food is converted into simple absorbable forms. That process is known as digestion, and that is given in option A. So our correct answer is digestion of food. Now next question. Energy giving food mainly contains that are known as carbohydrates. It is given in the option B. So our correct answer will be carbohydrates. For more informations, for more notifications regarding the result and other exams on about metrics, let's subscribe this channel. Thank you.
Hello student, welcome to Matrix YouTube channel. We are here to discuss the solution of Matrix Olympiad paper of class 5th reasoning conducted on 15 October 2023. Hope you did very well. So let's get started. So question number 51, 52. In each of the following questions, a number series is given with one term missing. Choose the correct alternatives that will continue the same pattern and replace the question mark in the given series. So series is 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51 and find the next term. So first find the pattern of the question. So pattern of the question is if we adding plus 7 in each term, then we get the next term. Okay, so plus 7, now again adding plus 7, now adding plus 7 plus 7 plus 7 plus 7. It means 51 plus 7, 51 plus 7, it means 58. So 58 is the next term of this series. So right answer is option D. Let's move on to the next question. So next question is 0.5, 0.55, 0.65, 0.8 and find the next term. So series is 0.5, 0.55, 0.65 and 0.8 and find the next number. Okay, 0.5 it means 0.50, 0.8 it means 0.80. So 0.50, now adding 0.05, it means 0.50 plus 0.05, it means 0.55. Now again adding 0.10, 0.55 plus 0.10, then it means 0.65. Again 0.65 plus 0.15, 0.65 plus 0.15, it means 0.80. Now adding 0.20 in 0.80. If adding 0.20 in 0.80, it means 0.1, it means 1. So next term is, next missing number is 1. So here option C is the correct answer. So let's move on to the next question. So next question is question number 53. In the given question, various terms of an alphabet series are given with one term missing. As shown by question mark, choose the missing term out of the given alternatives. So series is J, M, P, S, V and find the next alphabet. Okay. Position of J in English alphabet is 10. Position of M in English alphabet is 13. Position of P is 16. Position of S is 19. Position of V is 22. Now adding plus 3 in each alphabet, then we will get next term. Okay, plus 3, again plus 3, plus 3. Now similarly adding plus 3. 10 plus 3, 13, 13 plus 3 it means 16, 16 plus 3 it means 19, 19 plus 3 it means 22. Now 22 plus 3 it means 25. 25 it means Y. So missing alphabet is Y. It means option B is the correct answer. So let's move on to the next question. So next question is question number 54. I am facing south. If I turn left, now which direction am I facing? Okay. Before starting this question,
you should know that there are 4 types of direction. One is north, south, east and west, and there are 4 cardinal direction. It means northeast, southeast, southwest, and this is northwest. Okay, if I am facing south, if I turn left, one left turn, it means 90 degree anti-clockwise. One right turn, it means 90 degree clockwise. So if I turn left, it means 190 degree anti-clockwise direction. 90 degree in anti-clockwise direction. So my final direction is in east direction. So I am facing in east. It means option A is the correct answer. So next question. So next question is question number 55. Rajni goes to market which is towards east from her house. If she has to return home, in which direction will she come? So Rajni goes to market from her house and goes to market from her house. If she goes in the east direction, if she has to return to home, okay, in which direction will she come? So she will come in west direction. So correct answer is west. It means option B is the correct answer. So next question is question number 56. Choose the mirror image of the following combination of alphabets from the 4 alternatives given below. So find the mirror image of ultra. As you know, A is near the mirror. So it will remains near the mirror in the mirror image. So first we will find the mirror image of A. So mirror image of A, then find the mirror image of R, then find mirror image of R, and then find the mirror image of T. Now find the mirror image of L, and last find the mirror image of U. So this is the correct mirror image of ultra. It means option A is the correct answer. So let's move on to the next question. So next question is choose the one from the alternatives which most closely resemble the water reflection of the image given below. Okay, find the water image of the given image. So water image of the given image. So the object is near the water. It remains near the water in water reflection. So water image of this image is look like this. So correct answer is option C. So let's move on to the next question. So next question is question number 58. Nikhil ranked in 8 in a class of 50 students from the top. What is his rank from the bottom in the class? So find the Nikhil's rank from bottom side. So given is total student is equals to 50. Okay, Nikhil rank from top side is 8. Find the Nikhil rank from bottom side. Okay, so formula is find Nikhil bottom rank is equals to
total student minus Nikhil rank from top side plus 1. Total means there are 50. So 50 minus Nikhil's rank from top side is 8 plus 1. 50 minus 8 plus 1, it means 43. So Nikhil's rank from bottom side is 43rd. So here is option B is the correct answer. So let's move on to the next question. So next question is question number 59. Using the BODMAS rule, calculate the value of given expression. So BODMAS means B means bracket, O means order of power, D means division, M means multiplication, A means addition, and S means subtraction. So 6 multiply 7 minus 4 into 8. So first multiply the numbers, then subtract. So 6 into 7, it means 42 minus 4 into 8, it means 32. So 42 minus 32, it means 10. So 10 is the value of given expression. It means option B is the correct answer. So let's move on to the next question. So next question is question number 60. How does the given shape look like when the shaded part is folded in? When given image is to be folded along the dotted line, then we will get the image like this. Then we will get the image like this. It means option D is the correct answer. So thank you everyone